Hello friends, in this video we are going to discuss about ketones or alkanones. Ketones, as we all know, it's a functional group in organic compound family, and before letting you for ketones, I want to discuss about what are terminal and non-terminal functional group. There are two categories of functional group. One is called terminal and another is non-terminal functional group. Terminal and non-terminal functional group. So what is terminal functional group and what is non-terminal functional group? Functional group which can't be placed at the middle of any compound or molecule is called terminal functional group. Are you able to understand? Which can't be placed in the middle of organic compound. How you will get this? Terminal functional group. For example, if I take alcohol or aldehyde will be the better option. CHO. This is your aldehyde which can't be placed at anywhere in the functional group except terminals. So this is called your terminal functional group. And what about non-terminal functional group? These are the functional group which have bisided joining to a molecule, and that can't be placed at the terminal. So it is called non-terminal functional group. For example, if I take ketone, because before letting you for ketones, I want you to know that it is a non-terminal functional group. It is stated by C double bond with two terminals open to connect with the two families, with the two organic compounds, and they produce a non-terminal functional group. दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कीटोन से एल्केनोन्स की। उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि टर्मिनल और नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। जब आप ये जानेंगे तभी आप जानेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन में क्या अंतर है। तो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप वो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जो किसी भी कंपाउंड के टर्मिनल्स पे अटैच्ड होते हैं, मतलब या तो आगे या फिर पीछे, वो बीच में सेंट्रलाइज नहीं होते, क्योंकि जहां से वो अटैच होंगे वहीं से काउंटिंग शुरू होगी। इसलिए टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स मिडिल में नहीं होते। फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड आप हमेशा या तो आगे या फिर पीछे आप उसे पोस्ट करेंगे, वो सेंटर में नहीं आ सकता। लेकिन नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप वैसे ग्रुप्स होते हैं जो टर्मिनल्स पे नहीं आते, वो कभी सबसे आगे या सबसे पीछे नहीं रहते, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा बॉन्डिंग फ्री होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कीटोन के अंदर क्या फॉर्मूला होता है? CO, एंड इट हैज two bonds to connect with two small families or two bigger families, and they produce a different compound which is always will be placed in the middle, somewhere in the middle, not in the terminal. So that's why it's called non-terminal functional group. अब हम बात करते हैं कि क्या है कीटोन्स और एल्केनोन्स। पहली चीज, the first thing we know about ketone is it is a non-terminal functional group. Okay, and what is the formula of ketone? It is single bond carbon, double bond O, single bond. And whenever it is placed in organic family or alkanones form, there is R single bond C double bond O, R or R dash. What is this R? R is any alkyl group which is connected to ketone. And what is R dash? R or R dash may or may not be same. Like if R is CH3 single bond, R either CH3 or it will be any other compound like C2H5 or else. This is called R
C double bond O, R or R dash. This is the formula, general formula for ketones or alkanones. Now if I take some example, it will be better to understand. दोस्तों हमने बात की कि कीटोन्स होते क्या है. कीटोन्स होते हैं नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप. फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड O विद टू टर्मिनल्स ओपन, और इसका जनरल फॉर्मूला होता है R C R और R डैश. R और R डैश क्या है, इसके अंदर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स है जो अटैच्ड होंगे और नया कंपाउंड फॉर्म करेंगे. फॉर एग्जांपल इफ आई टेक प्रोपेनोन, हियर C double bond O with two terminals open. This can be attached with any functional group, any alkyl group. Like if I add C2H5 in both the sides, how the structure will be formed? C double bond O, C single bond, hydrogen, hydrogen. This is the structure for the compound which stated above. It is called, how many compounds are there? How many carbons are there? 1, 2, 3, 4, 5. So it is a pent. Pent, single bond ane, and what we will add when there is a alkanone in the compound? It is one. So the compound is pentanone. Okay. For other examples, let us take a smaller one so that it can be easier to understand. Like if I add CH3 in both the sides, here R and R dash both are same. Okay, so if I elaborate this, this is your complete structure. Now naming of this, 1, 2, 3, 3 carbons, so it is prop, single bond ane, and ketone is joined, so one. Okay, you got this. दोस्तों अब हम एग्जांपल ले रहे हैं जिसके अंदर हम दोनों टर्मिनल्स पे जो कंपाउंड जोड़ रहे हैं, एल्काइल ग्रुप जोड़ रहे हैं, वो सेम है. जैसे CH3, दोनों तरफ CH3 है, तो R और R dash they are same in this case. In this case they are same. Now defining the structure, we calculated there are 3 carbons in a row with single bond. So prop for 3 carbons and for single bond, and for ketones we add ONE. क्या ऐड करते हैं हम? ONE. तो क्या हो गया पूरा कंपाउंड? प्रोपेनॉन. अगर इसमें हम R और R dash को इक्वल ना करें, अगर if we take some example of the compound where R and R dash is not equal, when R and R dash is not equal, for example if I take CH3 and C2H5, now here R is CH3 and R dash is C2H5. So this is the example of the compound where R and R dash is not equal. Now if I draw the structure, this is the complete structure, and when we are going to name it, start from this side, 1, 2, 3, 4, 4 carbons, so it is bute. Single bond, so it is ane, and ketone is added, so it is one. So the compound is butanone. जब हम एग्जांपल ले रहे हैं जहाँ R और R डैश इक्वल नहीं है, उस समय क्या होगा? जैसे हमने एग्जांपल लिया, R ले लिया CH3 और R डैश लिया C2H5. अब CH3 C2H5 कंबाइन किया हमने, तो ये कितने कार्बन हो गए इसमें? 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो ब्यूट. सिंगल बॉन्ड है तो N, और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन, तो ओन, ब्यूटेनोन. दिस इज द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एडिंग ketone with CH3 and C2H5 as R and R dash. This is all about ketone. Thank you for watching this video. I hope you understand. If you have any query, you can write me on the comment section. Thank you.